Let us come now to one more value, fraternity. Fraternity means that it is brotherhood. Of course, I include sisterhood, brother and sisterhood you can say. You know how Swami Vivekananda at Chicago said, instead of gentleman and woman or misters and all that, he said, all my brothers and sisters. So, this concept of fraternity has assumed great importance during the freedom struggle of India. It also assumed equal importance in the American War of Independence, in the French Revolution and in various other democratic revolutions all over the world. Be it South Africa, be it Japan, in many places fraternity or brotherhood and sisterhood plays a vital role in the democratic life of the people. Without a feeling of fraternity, or in simple Odia, Vaichara, Vaichara, you understand this word, I need not expand it further. Unless we have fraternity in the country, democracy will not work. Why democracy will not work? Now, if you fight, you will fight between each other. Then what will happen? Democracy cannot work. Democracy can only work if the ambience ensures that you consider brotherhood to be a vital principle in your life. You respect others. You are prepared to cooperate with others. You are prepared to adjust with each other. Just as in a family, so also in a country, adjustment is very important. If you do not, if you refuse to adjust with each other, you cannot remain together in a family. You can't remain together in a family. So also in a nation which is divided amongst itself, where people are fighting with each other, in that case, that country cannot remain democratic, it cannot remain civilized, it cannot. There is a concept which we have not dealt so far, but I hope that I want to introduce it right now. That is, something is called civil society, or in Odia we say Bhadra Samaj. Now, civil society, not only a civil society consists of a society, society means association of associations, where people live together. That is the larger political concept is a nation, nation state, but the social concept is a society. So, a society cannot exist without people being civilized. If the people are not civilized, it cannot remain. Now, a society of the citizens has always to be a civil society, where people respect each other. Where people respect each other, they are civil in their behavior. They do not come to blows on every small issue, and they want to live peacefully in their country. Then only you create a civil society. Now, civil society has many other meanings. Now, in this society, everybody may not be equally conscious. So, in a civil society, at least the top people, at least a small creative group are conscious of the need for maintaining peace and order. So, a civil society demands that there is fraternity, and without fraternity, a state or a country or a society cannot exist. If it exists, it will quarrel among the members, will quarrel amongst themselves, and it will break. It will break. So, civil society demands that there is fraternity, there is feeling of brotherhood and sisterhood amongst us. Brotherhood links all human beings irrespective of differences. We will have differences, men and women have differences, adults and children have differences, Hindu and Muslims have differences. But if you are civil, then notwithstanding differences, you can live together. It is not that on everything everybody will agree, it cannot happen, it cannot happen. But that does not mean if they do not agree, they will fight, they will kill each other. So, that is very important. Fraternity is a very important thing. Now, we have already discussed the role of the state, like equality, like liberty and so on. Now, the Constitution of India says fraternity is not the duty of the state. Please try to understand this. Fraternity is not the duty of the state. Equality is one of the, you have a duty, but the state has also a duty to treat all of you
equally before law or give you equal opportunity. But here fraternity, what the state can do? The Indian constitution is very clear, says that fraternity is not duty of the state, but exclusively the responsible of its subjects in the relation between and among themselves. This is something which the Constitution of India says is the responsibility of people of India. If they, how they will live with each other, how they will live in various communities together, how they will manage their diversity. Diversity is not bad. People speak various languages, practice various religions, they have various festivals, about unity in diversity in India. So, the responsibility of fraternity, the Constitution directly says, is the responsibility of the citizens, of the people who live, of the society which we live in. Article 51A declares it as there is a set of fundamental duties, there are also fundamental rights and fundamental duties. I have already given you the example of a coin, both the sides of the coin. There is no winny side coin. You have rights and you have duties. And in the fundamental duties under Article 51AE declares that it is the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or any other sectional diversities. So, duties are a part of it. Now, this duty we must discharge and we must live in harmony, notwithstanding our differences in religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, or our differences in gender, male and female, our differences in language, Odia, Bengali, Hindi, Urdu or Maithili or Awadhi, whatever be the language. Not then you can say Katki Sambalpuri or this Bihari, UP, like that, notwithstanding many other identities which you have. Sometimes you may be supporter of Calcutta Knight Riders as IPL team, I may be a supporter of Chennai Super King, or somebody else may be a supporter of Hyderabad. Notwithstanding any sectional differences, diversities, we must live in peace and we must live with diversity. How can you live with diversity? First of all, you must refrain from violence. You must develop positively respect for others. You must know that India is a country of diversity. We must be yet united. Notwithstanding any diversity, we must be united. Now, if we start fighting each other, suppose there is a cricket match, you are a supporter of Kohli's team or he is a supporter of Dhoni's team, and you cannot, if you start blows and everybody in the stadium start beating each other, then what will happen? The game cannot continue. There cannot be any cricket, there cannot be any football. If there is disharmony, if there is quarrel, if you come to blows, it cannot happen. So, that is why fraternity is very important. That is why the Constitution imposes on us a right, a duty. What is the duty? We have to promote this fraternity. We have to behave like brothers and all that. Article 51AF further asks each citizen to value and preserve the rich heritage of our composite culture. I have time and again said we are a unity in diversity. We have a duty to maintain our diversity, to respect our diversity, and that is how India can grow as a country. So, ओडिया रे द्विपद कहीदेवा फ्राटर्निटी माने भातृभाव भातृभाव जो कहूँ भाई भाई कथा कहूँ भौणी भौणी कथा मु कहूँ बोली धर खाली भाई नुह भौणी मैंने अच्छा स्वामी विवेकानंद जिते चिकागो भाषण देते जहाँ समग्र पृथ्वी को चकित कर देता तार प्रथम शब्द ही चकित करदेला कौन विवेकानंद कहले मोर भाई और भौणी माने जिते से अमेरिका चिकागो कहले मो भाई और भौणी माने सेतबले से शब्द कई व्यवहार करनथिले गोटे पब्लिक स्पीच रे भाषण रे एवं विवेकानंद बाणी समग्र पृथ्वी को चमकई देता। यही जो भातृभाव परस्पर भितर स्नेह श्रद्धा या बिना भारत भली एक वैचित्र्यपूर्ण विभिन्नतार भरपूर देश
किपरि एकाठी रही पारिबनी जदि एठी हिंदू मुसलमान बाड़िया पिटा हेबे एठी जदि स्त्री पुरुष माने बाड़िया पिटा हेबे एठी जदि ओडिया बंगाली माने बाड़िया पिटा हेबे एठी जदि आईपीएल क्रिकेट रो चेन्नई टीम सहित दिल्ली टीम वाला बाड़िया पिटा हेबे केमती समाज रहिबो एई भातृभाव बहु आवश्यक आम भितर विशेष कर भारतवर्ष रे जोटी भाषार भिन्नता अच्छी जोटी धर्मर भिन्नता अच्छी जोटी आंचलिक आइडेंटिटी अच्छी आंचलिक संज्ञा अच्छी एवं 120 कोटी ऊर्ध लोक बसवास करुचंती विभिन्न प्रकार भौगोलिक वातावरण थिबा अंचल अच्छी एपरिकी कार नाक चेपटा तो कार नाक गोजिया तो किए कोला तो किए गोरा कि आउ हलदिया देखा एते प्रकार जो विभिन्नता रही से विभिन्नतार भारत एक देश ही किपरि रहिबो जदि आम मान भितर भातृभाव न रहिबो भाईचारा न रहिबो आमे कटक ओडिशा को कटक भाईचारार सहर कहीं बहुत बड़ कथा ये कहीं भारतवर्ष में गोटे समय जो भारत पाकिस्तान भाग भाग है एवं चारिआडे दंगा व्यापिला एवं भारतवर्ष कटक बहु मुसलमान लोक अच्छा से काल भी थे कटक को दंगा व्यापी नाला कलिकतार प्रबल दंगा है किंतु कटक को दंगा हो नाला तेणु समस्ते कहले अरे भाई ओडिशा भली गोटे राज्य अच्छी जोटिकी लोक मैंने चारिआडे दंगा व्यापुची पाख राज्य एत जोर रे दंगा व्यापुची किंतु ओडिशा को छुई नहीं कटक एत मुसलमान अच्छा किंतु दंगा छुई नहीं तेणु से कथा एवं तुम जान कटक साही लोक मैंने किपरि परस्पर को साहाय्य करती एवं भाईचारा किपरि अच्छी ता अन्य सहर में अच्छी ना बोली मुझे कहूने किंतु कटकर भाईचारा कथा कहुए जमती तुम कौच ढेंकानाल बरा हाँ आउ कटकर भाईचारा बोली कहुए बुझल कटक बारवाटी स्टेडियम पाखर दहीबरा भारी विख्यात सेपरी कटक गली गली लोक मैंने जो परस्पर स्नेह श्रद्धार बंचती साहाय्य करती साही रे से कथा को लेकर बहु आलोचना हुए तेणु यही भाईचारा नथिले आमे किपरि आगू बढ़ी पारिबा आगू बढ़िया तो बहुत दूर कथा आमे बंची पारिबानी कहीं ना परस्पर भितर कंदल लगी रहिबो हिंसा लगी रहिबो इत्यादि इत्यादि कथा हो यही भाईचारा कथा कहवाक जाए भारतीय संविधान गोटे बड़ कथा कहूँ से कहूँ जे भाईचारा सृष्टि करवाटा सरकार दायित्व नुह लोक मानकर दायित्व मौलिक अधिकार सहित भारतीय संविधान रे मौलिक दायित्व कथा रही एवं ये जो दायित्व कथा रही ए दायित्व रे कहा जे लोक माने परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण रे रहिबे एवं से सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि करिवारे सहायक हेबे एवं विभिन्नता को सम्मान देबे जदि विभिन्नता को आमे सम्मान न देवा शिखिबा ताले आम देश एकाठी की रही पारिबो नाही थरे विभाजित हो सारी हिंदू मुसलमान मान भितर मतांतर जोगु मतांतर थाई पारे तम मत मो मत भिन्न हो पारे मत भिन्न न हो किंतु मन भिन्न हवा उचित नुह से बारंबार कहूँ मतांतर को मनांतर रे परिणत कर नाही तुम सांग सुख परिवार मध्य कौन सी विषय तुम दी जनकर मत अलग हेले कि अधा लोकंर मत एपटे अधा मन एकाठी रखिब मतांतर हो पारे किंतु मनांतर हम नहीं ऐक्य भाव नष्ट हम नहीं भाईचारा नष्ट हम नहीं तेणु यही कथा को मन रखिले जाकि भारतीय संविधान भारतर गणतंत्र रक्षा हो गणतंत्र रक्षा करने भातृभाव रक्षा करने अत्यंत आवश्यक बर्तमान आसवा आउ गोटे कथा को डिग्निटी व्हाट इज डिग्निटी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज टू बी मेंटेन्ड फॉर प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी अनलेस यू रेस्पेक्ट गिव रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी you cannot promote fraternity. If you want to promote fraternity, you have to learn to respect each other. Our constitution acknowledges that all citizens, men and women equally, have a right to an adequate means of livelihood under Article 39A and just and human condition of work under Article 42. So, we have not only abolished caste to ensure dignity, we have ensured if you disrespect, if you compromise somebody's dignity, there is provision under law to punish you. You can be punished for not respecting others. If you abuse somebody in the name of caste,
in the name of religion, in the name of gender, you cannot abuse. It is not allowed under law. You must refrain from abusing each other. Because if we allow you to abuse each other, then how can brotherhood be, fraternity can be promoted? Fraternity cannot be promoted if you allow people to abuse each other. Article 17 has abolished practice of untouchability by declaring it as a punishable offence. So, आत्मसम्मान, dignity कहले कौन? आत्मसम्मान, समस्त को मनीष हिसाब से मनीष पणिया रक्षा करियो खबो, मनीष हिसाब से समस्त को सम्मान करियो खबो। एपरिक छोट पिला मान सम्मान करियो खबो। जदि आम क्या असम्मान करवा, असम्मान प्रदर्शन करवा, तांको गाली गुलज करवा, एब्यूज करवा, ताहले भाईचारा रहिबनी। भाईचारा किपरि रहिबो? That is what the constitution says. Dignity of the individual is to be maintained for promotion of fraternity. Without promotion of fraternity, dignity cannot be promoted. Our constitution acknowledges that all men and women are equal, have the right to means of livelihood, माने जीविका निर्वाह करिवा पई गोटे स्वाधीनता दरकार एवं मिनिमम कंडीशन सरकार एनश्योर करिवे। केमते करिवे? 8 घंटा रु काम करिवार मैक्सिमम लिमिट है 8 घंटा। 8 घंटा रु सप्ताह को थरे गोटे दिन पेड हॉलिडे दबाक हो, रविवार दिन काम करि परिबोनी, पेड हॉलिडे दबाक हो, इत्यादि इत्यादि कथा अछि। सेमती संध्या परे थाना को स्त्री लोक मान को पुलिस वाला डाक परिबेनी कौन सी कारण, इत्यादि इत्यादि बहु प्रकार आईन रही जो थे कि तुम आत्मसम्मान रक्षा पाइब। जदि जन को धरले भी धर चोर बोली भावुंट ताकू रास्त नेबाक हो अल्प बाट गाड़ी ना कौन कारण चल कि न खोजे, जदि पुलिस भय ना जे से लोकटा दौड़ी पलैज तार हाथ कड़ी पकेवा आवश्यक ना, तार अंटारे दौड़ी देवा आवश्यक ना। जदि भय अच्छी ताल करें किंतु नॉर्मली हाथ कड़ी भी पकई पारे, कारण तार आत्मसम्मान को से दोषी सब्यस्त ही नहीं पर्यंत, आगुरी तो दंड दे हेबनी। दोष सब्यस्त ना पर्यंत निर्दोष भाव में व्यवहार कर खब। यही भाव में भारतीय संविधान रे आईन रे व्यक्तिर सम्मान को आत्मसम्मान को रक्षा कर व्यवस्था कराई एवं बहु प्रकार जो स्थान रे कर्म स्थान रे धर तुम गोटे ऑफिस कर प्राइवेट ऑफिस कर तुम जब गोटे पायखाना करनी, लोक मैंने परिश्रा जावाई व्यवस्था करनी, पानी टिके पीबार व्यवस्था करनी, ताल आत्मसम्मान रहिबो। जो मैंने कम कर तुम सहित मिसिकी रही। तेणु सरकार नियम कर जोटी पेट्रोल पंप देखो हाईवे रे सेठी निश्चित भाव में पायखाना कारण गाड़ी जी जाऊँगी जे तेल टिके पकेब से परिश्रा करने को जावाक चाहिए, पानी टोपे पीवाक चाहिए ता व्यवस्था करियो खब, पानी टिके दब पेट्रोल पंप व्यवस्था करियो। तो से भाया कथा कहीं कर व्यवस्था कराई कहीं तुम आत्मसम्मान रक्षा करने चाहती। सरकार चाहती नहीं जे तुम रास्ता घाट रे जोठी सोठी परिश्रा कर पका बोली, चाहती नहीं। से भाया आईन द्वारा यह सब कथा कराई एवं आत्मसम्मान न रक्षा कले भातृत्व किपरि आसिबो, फ्रैटर्निटी किपरि आसिबो? फ्रैटर्निटी आसपारनी। सो दैट इज वाई डिग्निटी एवं सबू काम को सामान बोली भाविबा, डिग्निटी ऑफ लेबर यहाँ गोटे बहुत बड़ कथा। एक कथा आम पर वर्क एथिक्स आउ थे आलोचना करवा जे ए मु जो कामटा करुच्ची बड़ काम, से माटी खोलुचे सेटा निम्न काम। से माटी खोलिले मध्य तुम हुए तो राजमिस्त्री काम कर, से माटी खोलिया काम कर, तुम हुए तो ऑफिस रे काम कर, तुम हुए तो कॉलेज रे शिक्षकता कर पारि थाओ, किंतु समस्त काम को सम्मान देवाक हम। तुम जदि कह यहाँ उच्चा सेटा नीचा, यहाँ बड़ काम सेटा बड़ काम नुह, से कथा नुह। आम कॉलेज रे तुम जो कॉलेज रे पाठ पढ़ुच जदि सेठी स्वीपर आसी क्लासरूम सफा करिवो नहीं, कॉलेजर पायखाना सफा करिवो नहीं, ताले कौन हम? अस्वास्थ्यकर परिस्थिति हो। तुम शिक्षक जी क्लास रे पढ़ाउछन्ति तांको काम जेपरि गुरुत्वपूर्ण, जे स्वीपर अच्छी जे झाड़ूदार अच्छी तार क्लासरूम झाड़ू करवा दायित्व मध्य एका प्रकार रे गुरुत्वपूर्ण। तुम देखियो मुना भाई एमबीबीएस सिनेमा रे संजय दत्त जे स्वीपर पोछुची ताकू जेतोळे कुंडई पकाउची है से किपरि व्यवहार करुची, ताक प्रति सम्मान भी देखौची। सम्मान देखा द्वारा से स्वीपर तार भातृत्व भाव आसुची, ताकू परस्पर से माने
ନିଜକୁ ନିଜେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ସିନେମାରେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ତୁମେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ, ସବୁ କାମକୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ, ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବଡ଼ ସାନ କାମ କହିବାକୁ ହେବନି, କେବଳ ଚିନ୍ତା ବି କରିବାକୁ ହେବନି। ତେଣୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଯେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ ତା ଭୟରେ କଥା ନୁହଁ, ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏ କଥା ତୁମେ ଡିଗ୍ନିଟି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସେ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। Let us now come to the next principle, unity and integrity of the nation. The word union in Article 1.1 of the Constitution, India stood for the unity of the nation. India, that is Bharat boli kuhauchi, is a union of states. I will not get into a great hair splitting confederate and union. Under our constitution, if you say if it is declared to be a confederation, that means the states within India have the freedom to go out of the country. When you say it is a union, then the states have no right to go out of India. That is the difference. Confederation and union. Under confederation, suppose India was a confederation, Odisha was free to go out of India, Tamil Nadu is free to go out of India. No, you have no such freedom. No state has a freedom to leave India. Why? Because India is a union. India is a union. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, the central government is known as union government and the provincial government is known as the state government in India. So Article 1, very first opening, first article says of India that India is a union. So, and how this unity, is union possible without unity? No, it cannot be possible. That is why unity and integrity of the country, it must remain together. This is a vital value, this is a vital duty of all citizens. Along with this, the word integrity was inserted in 1976 by the 42nd Amendment Act. I have already told you that before this amendment came, Khalistan movement was coming and it was feared that there was, like the partition of India into India and Pakistan, similarly there was a fear of further partition, and to avoid such a fear and to ensure that India remains united, and that is why the then Parliament inserted these two words, unity and integrity of the nation, into our preamble. But otherwise also, without these words also, unity and integrity is a part of Indian Constitution. I have already told you that the very first word used in Indian Constitution is unity, union. India is a union. Makes our Constitution aware of the pain India entered during partition. That is what I have already said. And unity in diversity has been the hallmark of Indian nationalism. You know, during the freedom struggle, everybody came together, Hindus, Muslims, other religions, Odias, Bengalis, Brahmins and Kshatriyas, everybody. Without this unity, we could not have fought the freedom struggle of India. India would not have become united. Had India not united, it could not have got its own independence. During the freedom struggle, we understood that unity in diversity is very important. National unity is possible in a highly pluralistic and heterogeneous society only through a spirit of common brotherhood and fraternity. Our Constitution expects all citizens of India to uphold and protect the unity and integrity of India as a matter of duty. So, this is the last value we are discussing. Unity, Bharatara ekatra bhav, je gotiye desho, भारतवर्षरे 1200 भाषा अच्छी, केते जे धर्म अच्छी, केते संप्रदाय अच्छी, भाषा अच्छी, संप्रदाय अच्छी, साइज रे भारत 5-10टा यूरोपर देश को मिसेले जी बड़ हम ताठू भारत बड़, लोक संख्यार तो बहुत बेसी, अमेरिका भारत रु 7 गुण जमी रे, किंतु क्षेत्रफल रे, किंतु आमे पॉपुलेशन रे तांकठू 3 गुण रु अधिक, पाखापाखि 4 गुण लोक अच्छु आमे,
एवं एठी विभिन्न भाषा व्यवहार कराउछि विभिन्न धर्मावलंबी भी लोक अछंती तेणु भारत गोटे संघीय राष्ट्र संघ किपरि एक संघ ना एथिरे जो कहा होछि इंग्रजी रे गोटे अछि कन्फेडरेशन गोटे होछि यूनियन आमे होछु यूनियन आमे कन्फेडरेशन नो कन्फेडरेशन जदि हबो ताले सेठी राज्य गुड़िक चाहिए मूल देशरू अलगा हो जाई पारिबे किंतु आमे सेमती नुह एठी ओडिशा बा बंगला बा तमिलनाडु भारतरू चाहिए मध्य अलगा हो पारिबे नहीं जदि सेटा रखि दिया जीवो प्रोविजन रखाई तांता संविधान रे जे राज्य माने चाहिए अलगा हो जिवे ताहले आम देश एकाठी होकर रही पारिबोनी एई जो संघीय व्यवस्था किंतु संविधान कहूँ नहीं भारत वर्ष एतिकिटा राज्य अछंती एवं प्रत्येक राज्य आमे भाषा भित्तिक राज्य गठन करूँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तो दुईटा राज्य हेले भी भाषा गोटे जदिओ केते सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दुईटा राज्य है बिहार एवं झारखंड रे भाषा मोटामोटी हिंदी ही चले जदिओ बिहार रे केतेक अंचल भोजपुरी अच्छी केतेक अंचल मैथिली भाषा अच्छी केतेक अंचल हिंदी भाषा अच्छी से भाई झारखंड रे विभिन्न प्रकार आदिवासी भाषा अच्छी ओडिया अच्छी एवं हिंदी भी अच्छी तेणु यही जो विभिन्नता भितर एकत्रित भाव एवं जो भाईचारा कथा आमे कहले तेणु से सब कथा जदि आमे ऐक्य भाव रखिबा नहीं ताहले आमर संघीय व्यवस्था आमे व्यवस्था फेल मारियो विफल हो भारत खंड खंड हो आगुरी पाकिस्तान ना हिंदू मुसलमान ना रे गोटे थर खंड विखंड हो सारी एवं खालिस्तान मुवमेंट होता है 42तम संशोधन पूर्वर यही सब दृष्टि भारतीय माने यही दुईटा शब्द को भर्ती कले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऐक्य शब्द एवं संघीय व्यवस्था कथा यही दुईटा कथा को खूब जोर दिखाई तेणु यही भाव में भारतर संविधान रे विभिन्न वैल्यू रही नाउ लेट अस कम टू practically the conclusion. We will now conclude, we will try to conclude. Now the values of the Indian Constitution. On the eve of independence, several kingdoms or princely states within British India, say Hyderabad, wanted to remain independent of India. Hyderabad चाहिए स्वाधीन ही रहिबो एपरिक ओडिशा रे मध्य मयूरभंज रे जो महाराजा थिले बारिपदार जो महाराजा थिले से सांगे सांगे भारत रे मिसी नथिले एपरिक बलांगीर राजा मध्य भारत रे मिसवा पे टिके कुंठा प्रकाश करते अवश्य समस्ते पर मिसिले तेणु जो भारत स्वाधीन है केतक अंचल भारत टू स्वाधीन रही चाहिए जेपरिक हैदराबाद विशेष भाव में तेणु कौन है सरदार पटेल अनेक समय बुझाबुझी करके समस्त एकाठी कले दरकार हेले बल प्रयोगर धमक देले बल प्रयोग करने आवश्यक ही नाला बल प्रयोगर धमक देले परे जेतोले गोवा जोटा कि पोर्तुगीज मान पाखे थिला भारत में मिसला नहीं से सरदार पटेल अवश्य मरी जाते किंतु नेहरू प्रधानमंत्री थे बल प्रयोग है किंतु पंडिचेरी फ्रांस अधीन थिला किंतु फ्रेंच सरकार स्व इच्छा भारत जो कहला पंडिचेरी तुम छाड़ी आमको दे दियो से माने देदेले किंतु पोर्तुगाल देलानी तो बल प्रयोग करियो खाला सो इंडिया's independence यूनिटी fraternity and all these things at times force had to be used. On the eve of independence, several kingdoms or princely states within British India, say Hyderabad, wanted to remain independent of India. Our constitution makers wanted these princely states to join the Union of India. We have also witnessed secessionist movement like Khalistan. Our enemies have also tried. I will not name any country, but you all know how some foreign countries have been trying to divide India time and again. Problems are going on in Kashmir. There are foreign powers who are interested that Kashmir goes out of India. Our enemies have also tried to divide India. It appears that many laws are closely connected to our deeply held values. The laws that is there in Indian Constitution are definitely connected to these values which you have discussed, like fraternity, unity and integrity, like equality, so many other values which you have discussed so far. All these are necessary for remaining we as India, we as remaining as Indians. India and Indians will not remain unless these values are inculcated. Preamble is committed to freedom,
equality, social justice and some form of national unity. There is a clear emphasis on peaceful and democratic measures. I will not expand this because we have already discussed one by one each of them. Freedom of expression is an integral part of the Indian Constitution. Without freedom of expression, India cannot be a democratic country. Fundamental rights of our Constitution reflect the values of individual freedom. Liberalism, as reflected in our Constitution, is always linked to social justice, because those who have been deprived, those who have been discriminated, they must be brought up to the level of others. India is a land of multiple cultural communities. The Indian Constitution has always been secular. Our Constitution sought to evolve true fraternity, as the main objective was to evolve as one community. The people are themselves the makers of their own destinies. Democracy is the tool people have used to shape their present and future. We want to live together, prosper together on the basis of the principles of equality, liberty and fraternity. Now, if you look back at these, what are the values that India promotes? What are the values that is essential in our Constitution? All these can be explained with examples. I will take up one by one and give you one example. Now, first is that when we became independent, Pakistan got partitioned, India Pakistan got partitioned, and there were some princely states like Hyderabad, there were also many others who wanted to remain neither with India nor with Pakistan. They wanted freedom from us. So, at time force had to be used to keep India together. Our constitution makers wanted princely state to join India. I have already given you the example of Hyderabad and all that. Now, ओडिया दी चार्टा उदाहरण देदेले कथाटा सरल हम. प्रथम उदाहरण है जे भारत जो स्वाधीन है से भारत पाकिस्तान विभाग हो गला, जहाँ फल कि बहुत असुविधा है एवं भय करागला जे भविष्य आउ थे खंड विखंडित हो तेणु एकत्रीकरण रहिबो. जो माने आमर संविधान तैयारी कले से चाहिए जे भारतवर्ष भविष्य में जमी खंड विखंड न हुए. भारत को खंड विखंड करने विदेशी शक्ति माने बारंबार चेष्टा करपरिक आज पर्यंत काश्मीर रे चेष्टा चलती केमती काश्मीर भारत बाहर जाव. कौन सी देश ना नवा दरकार तुम समस्ते जाच. भारतवर्ष एपरी सब आईन करागला जे यही सब संविधान एपरी आईन अच्छी जो मूल्यबोध गुड़िक बर्तमान सुधा आम आलोचना करचे, जहाँ भाईचारार कथा कहले, जहाँ आईन सागर समस्ते समान कथा कहले, समस्त को समान सम्मान देवा कथा कहले, गणतंत्र कथा कहले, साधारणतंत्र कथा कहले, ए सबू मूल्यबोध को सम्मान देकी भारत में सब संविधान लिखाई. भारतर जो संविधान जो मुखबंध से मुखबंध इक्वालिटी, फ्रीडम बा स्वाधीनता, समानता, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, देशर ऐक्यकरण इत्यादि इत्यादि कथा को सम्मान दे आछि. सबुठ बड़ कथा है आम शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण भाव में गणतंत्र भाव में एकाठी रहिबा एवं वाक् स्वाधीनता बा लिखिबार स्वाधीनता आम संविधान रे एक अंश. मौलिक अधिकार गुड़िक 6 प्रकार मौलिक अधिकार आम देश में अच्छी एवं मौलिक दायित्व अधिकार दुईटी कथा आम संविधान में वर्णना कराई. भारत एक वैचित्र्यपूर्ण देश, विविधतार देश. ये विविधता सत्वे ऐक्यकरण आवश्यक. ये ऐक्यत्व होची भारतीयता. आमे सब बड़े अनुभव करिबा आमे भारतीय. आमर संविधान सबु बड़े भाईचारा को बढ़ावा पई चेष्टा करिछि. लोक माने निज भाग्यर अधिकारी, निज भाग्य निजे तैयारी करुचंती एवं गणतांत्रिक माध्यम रे देश को निजे शासन करुचंती. ये होची मंजी कथा एवं गणतांत्रिक मूल्यबोध आमको रक्षा करने को हम. आमे समस्ते एकाठी रही चाहूँ, एकाठी आगे चाहूँ. आमे समस्त को समान अधिकार मिलू बोली चाहूँ, मौलिक अधिकार मिलू बोली चाहूँ. मिनिमम खाइबा पीबा रहिबार एवं शिक्षागत अधिकार मिलवा चाहूँ एवं आमे इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी को आमे एकाठी करने चाहूँ. तेणु वर्तमान तुम देख ये है समरी एवं लेट अस सम अप बोली तुम पुस्तक अच्छी ताकू तुम आउ थे पढ़ी नब. तो कथा को एतिक रखा एवं
आमे आसंता काली बा आउ दिने 2 दिन पर आमे द्वितीय चैप्टर आरंभ करवा एवं वर्तमान पे एतिके कथा रहिला। धन्यवाद।